and we'll continue from the previous lecture where we were discussing about the questions, development of research questions. So if we talk about the objectives, so we have the two kind of objectives. So one is the general objectives, and then we have the specific objectives. General objective are the kind of goals that the project hopes to achieve. So as a whole, what we want to achieve uh, as the result of that proposal or research project, so that is general objective. But the specific objectives, our objective is a specific result that the project aims to achieve within a given time frame. Mean to achieve that goal, we may have we may have a few parameters. Our results are the outcome of the activities which we will do or which we will execute during the time frame. So these are specific objectives, and these are general objective maybe one, and oftenly specific objective. They are more than one because we conclude those specific objectives to find the goal. I will give one example here that it will make you clear about the difference between the general objective and the specific. So general objective to determine the impact of compost application on crop production. So this is very general. But when we talk about specific, so we will add compost when we will determine the impact of compost application on per hectare wheat grain. So in crop production, we have a grain yield, that is one factor. And so we have that specific objective. Uh, the next specific objective to investigate the impact of compost on soil microbial population. So that we on soil structure, that we on the soil density or bulk density, or overall soil health. So these may be different specific objectives, but all these objectives will ultimately contribute to the goal of that research proposal. हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं और या हम देखना चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है कंपोस्ट का क्रॉप प्रोडक्शन. अब क्रॉप प्रोडक्शन को क्या चीज डिटरमिन करती है कि हम उसमें देखेंगे उसकी शूट ग्रोथ कितनी है, टोटल बायोमास प्रोडक्शन कितनी है, उसमें टोटल ग्रेन कितने हैं, ग्रेन यील्ड कितनी है. You can also determine the quality of the grain, that may also be a specific objective. Then जो दूसरा फैक्टर है वो सॉइल हेल्थ का है. सॉइल के डिफरेंट पैरामीटर जो है वो हम चेक, बिकॉज दे विल आल्सो रिलेट टुवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन. अगर हम कंपोस्ट सॉइल में डाल रहे हैं और वो सॉइल के स्ट्रक्चर को बेटर कर रहा है, तो दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द क्रॉप प्रोडक्शन. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंक्लूड that what will happen if we will add compost to the soil. So all these specific objectives, they lead us toward the general objective. So specific objectives, it's very important because we have to set these objectives by ourselves based on the methodology which we are using. हम जो कंडक्ट करने जा रहे हैं उसकी बेस पे हमने बताना है कि हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है. So these are also achievable. So when you are executing a research, so you will have a focus on these. So that's why it is very important to have very specific objectives and rightly. So there are some characteristics that they should be smart. Smart means specific. ये नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और दूसरे उसमें फर्क ही कोई नहीं है, एक ही चीज को हम बार बार करें. वो स्पेसिफिक होना चाहिए. दैट शुड बी मेजरेबल. कि आप एक ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करते हैं बट यू आर नॉट एबल टू measure during your course of study, then that should be achievable.
So that is something which you are targeting. There are something which are measurable, but it's not easy to achieve that. So you may have some constraint for that. So you may not have some labor power for that. You may not have that sophisticated uh, instrumentation for that, and that may not be achievable during that course of time. अगर आप 2 साल के लिए प्रपोजल लिख रहे हैं और वो जो उसको अचीव करने के लिए आपको 4 साल चाहिए, तो दैट इज नॉट अचीवेबल. देन दैट शुड बी रियलिस्टिक. उसमें हवा में बातें नहीं होनी चाहिए कि रियली वी कैन अचीव दैट, कि वो उसकी सेंस है कि जो आपका टॉपिक है, जो आपका टाइटल है, दैट शुड हैव सम रिलेशन टू दैट. ये नहीं कि वो टाइटल हमारा और है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे, जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे और हैं, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम दूसरी डायरेक्शन में हम ले जाएं. सो दैट शुड नॉट बी. एंड टाइमली मीन दैट शुड बी achievable, or you can say within that course of time we could achieve that. वो टाइमली होने चाहिए. तो ये स्मार्ट जो एब्रीवेशन है, इसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया है जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, कि इस तरह के स्मार्ट होने चाहिए कि वो स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रियलिस्टिक हो, टाइमली हो. और जो इनसे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि वी शुड ट्राई टू कीप देम वेरी सिंपल. अगर आप 10 सिंपल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सो दैट कैन गिव अस a very good general goal. क्योंकि इसको हमने डिटरमिन करना है, ये हमारे डिलीवरेबल भी हैं, कि हमने ये चीज प्लान की, हम कोई हमसे ये पूछे कि आप इसमें से क्या आपने निकाला क्या है, तो आपके वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. So based on that, you can conclude your general objective. So then that was actually the part of previous lecture, but we could not manage. Now I am going to start the materials and methods, which is a very crucial when you write research proposal. It should contain sufficient detail for readers to replicate the work done and obtain similar results. So whatever we will do, we will write them, or what we want to do, we will write it in such a way that if someone else want to uh, replicate or reproduce, she should can do that. रिसर्च प्रपोजल में समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपने कोई इसमें न्यू आइडिया दिया है, तो वो उस मेथड को डिफरेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल मेथड्स हैं या प्रोटोकॉल, उसके साथ उसको टैली भी करें. और उसमें बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है, अगर वो वाकई फंडिंग देना चाह रहे हैं किसी को और उनका आइडिया उनको पसंद आ गया है, तो वो उसमें कोई ब्रीफ एक्सपेरिमेंटेशन भी करवा सकते हैं किसी से, कि आप देखें कि इसमें ये अचीव हो रहा है कि नहीं. If it's very new and it's not already available, तो अगर वो पहले नहीं है इंफॉर्मेशन, तो वो उसमें फंडिंग एजेंसी कोई है, अगर वो बहुत बड़ी फंडिंग देना चाह रहे हैं, तो वो किसी को वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, इन अलाइन कर सकते हैं कि वो जो मेथड लिखा है वो सही है अभी के. तो इसलिए ये जनरल कंसेप्ट है, द मेथड शुड बी written in such a way that the reader can replicate it and can obtain the similar results. अगर वो इस तरह रेप्लिकेट करे कि वो जो रिजल्ट हम अज्यूम कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसी तरह के उसके भी हैं. This provides a description of the exact action plan strategy to be used to answer the research questions. So basically we have to answer the research questions which we have made. So our methodology should have protocol to get answer of all those questions which we have.
ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन है, 2 के आपने मेथोडोलॉजी बयान कर दी, 2 की नहीं की. So that is not the right way. You have to mention the methodology of all your activities which you will do to answer your research question. Then methodology of a project spells out in specific steps and procedures how the research will be undertaken. उसका जो sequence है वो you have to write. So it means it needs sufficient details that क्योंकि किसी ने आपको फंडिंग देनी है, उसने ये देखना है कि जो आप करना चाह रहे हैं क्या आप कर भी सकते हैं, ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता. इसलिए आपने उसके स्टेप्स जो हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स, वो जरूर लिखें. The method section will be the longest section of the technical narrative and will present the description of the work to be done in accomplishing the project object. The technical part है that this is the lengthy part because you have to give the details. The other technical parts are introduction and abstract, and it's mostly the methodology has a larger volume as compared to those. And very important, which a funding agency see first of all that the objectives which you have decided, the specific objectives. Have you added the methodology for all those achievables? जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि जितने रिसर्च क्वेश्चंस हैं उतने आपने उनको रिलेट करना है बेसिकली कि आपने उनकी मेथोडोलॉजी लिखनी. फिर उसमें जो ऑब्जेक्टिव आपने बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल्स होते हैं कि जिनको आप मेजर करके बताते हैं कि वी हैव अचीव्ड दैट. तो उन सब के ऑब्जेक्टिव्स की मेथोडोलॉजी होनी चाहिए. ये जरूर ज़हन में रखें. बाज़ का ये होता है कि यो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि ये इस तरह हो जाएगा, बट एंड यू ऐड दैट इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इवन इट्स वेरी स्मॉल थिंग. But if you haven't added the methodology to achieve that objective, so that will not be accepted. So this also outlines the apparatus, instruments, and procedures to be used to answer the research question. इसमें instrument भी होंगे, procedures भी होंगे, protocol भी. The research method, which is again very important, should be detailed enough to let the reader decide whether the methods you tend to use are adequate for the research at hand. Again, I read, the research methods should be detailed enough to let the reader decide whether the methods you intend to use are adequate for the research at hand. कि जो आपने लिखे हैं मेथड वो एडुकेट हैं भी कि नहीं, वो पूरे हैं कि जो आपके टारगेट्स इनको अचीव करते भी हैं कि नहीं, वो पूरी इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं कि नहीं. तो दैट मस्ट बी इन सच ए वे कि जो आपने रिसर्च आपने करनी है वो मेथड्स जो है वो ऑलरेडी एडुकेट. एडुकेट का क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. वो अगर हम कहें कि हमने 10 मेथड लिख दिए और उनमें मेथड रिपोर्टेड ही नहीं है, रीडर्स ने तो देखना है कि वेदर दोज मेथड्स आर वैलिड, वो वैलिड हैं भी कि नहीं. वैलिड का क्या मतलब है कि वी हैव मस्ट हैव द रेफरेंस फॉर, कि जो भी हमने मेथड देना है उसका रेफरेंस देना है. बट इफ वी डोंट हैव अ मेथड, बिकॉज समटाइम यू हैव योर ओन मेथोडोलॉजी, so generally it's not like that because the methodology is always done and then it's published. But if you have some methodology and you don't have any reference, then you have to prove it logically at least, कि logically आप different theories की base पे आप करेंगे कि आप ये methodology करेंगे, तो इससे you will be able to get results. So then that will be acceptable. So we have to
satisfy the reader that the methodology which we are writing here, so that is adequate, valid, and is workable. It should go beyond the mere listing of the research tasks by asserting why you assume that the methods or methodology you have chosen represent the best available approach. So the funding agencies, so they always look for that the best way to do any task. So it's not only sufficient that if we just enlist, but we should also argue that why we have selected this methodology. So you may write some uh, advantages of that method, and if there are some limitations, you can also mention those limitations. So, but that should be very clear. Is what you can say is logical. Okay, उसमें आपके argument जो हैं वो शामिल. Then the last part which we decide, that is the title. So title, the good title should be representative of material inside the topic. कोई भी जो टाइटल है वो whatever the material you have in your document, किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है. या फॉर रिसर्च प्रपोजल इट शुड बी मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. इस प्रपोजल के अंदर कौन सा प्रॉब्लम एड्रेस किया जा रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है, ये भी शामिल हो सकता है टाइटल में. हम ये जब करेंगे आप लोग इसकी एक्सरसाइज, उसमें हम देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल का जो टाइटल है उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बहुत लो है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की या यूरिया की, तो उसके अगर हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. तो यू कैन राइट हियर दैट लो यूज एफिशिएंसी ऑफ यूरिया कैन बी enhanced by applying by coating zinc oxide or zinc nanoparticles. Or you can say use of zinc nanoparticles to enhance the use efficiency of urea. So in this you are writing or mentioning the both. You are also mentioning the problem because that is the low use efficiency of fertilizer, and then again you are also mentioning solution. So that is generally very good title if you have both in that. Even sometimes you can mention problem and solution and methodology in the title. For example, you can say that the foliar application of nitrogen or foliar application of zinc enhance the zinc content in the grain, or you can say effect of foliar application of zinc on zinc grain content. तो इसमें आपने उसके जिंक ग्रेन कंटेंट को एनहेंस करने का मतलब है कि आपने प्रॉब्लम मेंशन कर दिया कि ग्रेन में जो जिंक है वो कम है, आप उसको इनहेंस कर रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ जिंक. और कैसे अप्लाई कर रहे हैं? फोलियर एप्लीकेशन. आप सॉइल एप्लीकेशन से नहीं कर रहे, आप फोलियर से कर रहे हैं, तो यू हैव मेंशन्ड दैट. तो इस तरह का जो टाइटल है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दैट द टाइटल टेल्स द रीडर दैट व्हाट इज इनसाइड. Now that is the reference part. So it is always good to give credit where credit is due. So we have to cite the information, we have to cite the authors who has provided that information, and we have to give the reference list. So basically in the text, whatever we write, we mention the name of author and here there, that is a kind of hint. And then we gave the detailed information of those
publish scientific information in the reference list. रेफरेंस लिस्ट के अंदर हम उन वर्क की जो आपके रेलेवेंट हैं, जहां से आपने इंफॉर्मेशन लेके अपने डॉक्यूमेंट में लिखी है, उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर In this section, you list all the references you made throughout the research proposal, making sure that you comply with the referencing conventions or citation style that have been established for your specific field. तो इसको लिखने का एक खास तरीका होता है. So you have to follow that. So whatever is demanded from your funding agency. For example, if you are writing a synopsis for UAF, so you have to follow the instructions given by UAF to write those references. A reference list must include all work cited in the text. So whatever you have cited in the text, आपने introduction में cite किया है, आपने review of literature में cite किया है, आपने methodology में cite किया है, वो सारे reference इस list में होने चाहिए. And all the reference list, all references should be relevant and up to date. So those should be relevant. Whatever is inside the document, so that should be relevant to that and up to date, जितने वो new हो सकें, तो वो possible. And then all references listed must be cited in the text. अब ये नहीं कि reference list में आपने बहुत सारे reference ऐड कर दिए, लेकिन वो अंदर तो है ही नहीं, आपने कहीं पे उनको साइट नहीं किया होता. साइट का मतलब होता है कि आपने टेक्स्ट में जहां पे इंफॉर्मेशन लिखी है, वहां पे आपने उसका हिंट दे देना है कि फलां एट आल ने ये काम किया, तो उसकी डिटेल फिर रेफरेंस लिस्ट. जो आपकी रेफरेंस लिस्ट में रेफरेंसेस हैं वो साइट होंगे. और जनरली अल्फाबेटिकल आर्डर में जो रेफरेंस लिस्ट होती है कि पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले जो स्टार्ट हो रहे हैं. हम किस तरह लिखते हैं रेफरेंस फॉर्मेट? फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का है, इसमें लेमन ये उसका सेकंड नेम है, एच उसके फर्स्ट नेम का एब्रिविएशन है, ईयर है, फिर उस आर्टिकल का टाइटल है, जर्नल नेम है, और ये उसका वॉल्यूम नंबर है, ये पेज. इसके आगे हम एक्सरसाइज भी करेंगे. लेकिन जब हमने इसको, ये है वो स्टाइल जो हमने एंड पे लिखना है लिस्ट में या रेफरेंसेस में, जो टेक्स्ट के अंदर साइड करना है. हमने इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ली हुई है and we have added that in our research proposal and we cite in this way, lemon, 1986. So this is for the journal article with one author. So if you have two authors, Abdul Ghafoor, Abdul, then and so generally, sorry, ये जो full stop है ए के बाद वो नहीं है. अगर एंड होगा तो ये full stop नहीं होगा. And then a dot slim dot year and then this is the title, efficiency of calcium concentration in irrigation water for reclamation of this line sodic soil, and then this is the journal name. So in the above we have a science, this is single name, single word journal name. So agar single word ho, then we don't no need to abbreviate it, but if we have more than that, then we have to abbreviate. So here the abbreviation of Pakistan is PAK. It's not written here. PAK dot Journal J Agri Science, Pakistan Journal of Agriculture Science. Then this is volume, and then these are pages. And when we will cite in the text, then Ghafoor last name and the last name of the second author, Ghafoor and Salam, 1993. Then we have it more than two authors, Kelly, J.D., these are the first two names. Then these are the first two names, J.R. Stavely, and then P.N. Miklas. आगे ये उसी तरह टाइटल और प्लांट साइल एनवायरनमेंट, ये उसका प्लांट साइल एंड एनवायरनमेंट जर्नल है, उसका एब्रिविएशन. दिस इज वॉल्यूम नंबर एंड दीज आर द पेजेस नंबर. So we will cite in Kelly et al. So we cannot write all these names. So if you have even the hundreds of names here, so you will write only Kelly et al. Kelly et al. Et al mean उसके जो
हम नवा हैं जो उसके को ऑथर्स हैं, फिर इसके फुल स्टॉप, कॉमा और 1996। तो जब 3 ऑथर्स होंगे तो हम इसको इस तरह लिखें। अगर बुक का है तो ये बुक के उसी तरह आपने एब्रीवेशन करने हैं, सेकंड नेम फिर फर्स्ट नेम के एब्रीवेशन, देन एंड। ये फर्स्ट नेम्स के एब्रीवेशन आ गए, ये लास्ट नेम है, फिर ईयर है, फिर उसका बुक का टाइटल है, फिर जो पब्लिशर हैं वो, और सम टाइम वी राइट द पेजेस। अगर आपको पेज का पता है तो बेटर टू राइट द पेज। तो जो पब्लिशर है उसका शहर भी लिखना है, उसका जो कंट्री है वो भी मेंशन करना है। इसको उसी तरह हमने साइट करना है जिस तरह 2 ऑथर वाला हमने जर्नल आर्टिकल किया था, जोमबर्ग एंड मोराल 1990। तो ये टेक्स्ट के अंदर हमने इस तरह साइट करना। इसी तरह आप इसको देख लें, ये है चैप्टर, कि अगर आपके पास चैप्टर है किसी एडिटेड बुक में तो उसको किस तरह करना है। अब ये 2 ऑथर हैं, इन्होंने चैप्टर लिखा, उनको उसी तरह हमने एब्रीवेट कर लिया। फिर ईयर है, फिर चैप्टर का टाइटल है, फिर पेज नंबर है पी डॉट पेज 49 टू 66, उसके बाद डॉट है, फिर इन आई एन इन। जो एडिटर हैं उसके पहले 2 नेम्स जो हैं या एक नेम है उसका एब्रीवेशन और फिर उसका नाम। अगर एडिटर एक से ज्यादा है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये बुक का टाइटल है पोटाशियम इन एग्रीकल्चर, ये आगे पब्लिशर्स है ASA मेडिसिन, ये सिटी का नेम है और इस तरह। और इसको भी साइट करने का वही तरीका है कि आहम एंड बेले 1985। अगर ये 3 होते यहाँ पे आता तो फिर आहम एट आल आ जाता। तो ये इसकी साइटेशन जो है वो जर्नल की तरह ही आ गई टेक्स्ट के अंदर। I will give these 2 examples here. For example, you have an article, title is this, author names are these, journal name is this, pages are this, volume number is this, and year is of publishing is this. So you have to write the reference and you have to cite this in your article because you in your proposal because you got information from this article. So this we will write here. So Iqbal last name, कॉमा यू डॉट कॉमा एस डॉट फातिमा। ये जो सेकंड नेम है उसका सेकंड ऑथर है उसका पहला नाम जो है वो एब्रीवेट होगा, ये सेकंड नेम फुल आएगा, देन एंड सेट डॉट 2015 ईयर, फिर ये टाइटल आ गया, फिर ये जर्नल की एब्रीवेशन आ गई प्लांट एंड एनवायरनमेंट। इसमें अगर एंड वगैरह या ऑफ होता है वो नहीं होता ना जब हम एब्रीवेशन लिखते हैं, और ये उसका वॉल्यूम है और ये इसके पेजेस। और इसको हम साइट करेंगे इकबाल एटाल, क्योंकि ये 2 से ज्यादा हैं तो इकबाल एटाल 2014 ये फुल स्टॉप ब्रैकेट लग। दूसरा है कि ये आपके पास 2 ऑथर हैं, ये टाइटल है, ये 2 ऑथर्स हैं, प्लांट साइंस जर्नल का नेम है, ये पेजेस नंबर है, ये वॉल्यूम है, ये 2011 ईयर ऑफ पब्लिशिंग। और इसको लिखने के लिए आपने हुसैन M एंड R अहमद, ईयर, ये टाइटल, ये प्लांट साइंस इसका एब्रीवेशन आ गया, ये 12 जो है इसका वॉल्यूम नंबर आ गया, और ये पेजेस 4 टू। तो इस तरह इसका हमने रेफरेंस लिखना है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसको टेक्स्ट के अंदर जो है हुसैन एंड अहमद 2011 के नाम से आपने साइट करना है। तो दिस इज द सेम एज आई हैव मेंशनड अर्लियर। So this is synopsis writing for master research at UF. Title, abstract, need of the project, review of literature, materials and methods, references. So what we have discussed here, that is title, abstract, introduction. So introduction and need of project is the same. ये सेम थिंग है, सिर्फ ये हमारे जो यूएफ का कंपोजिशन है सिनॉप्सिस उसमें ये टाइटल मेंशन किया है, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल उसके अंदर मटेरियल जो है वो इंट्रोडक्शन वाला है, क्योंकि इंट्रोडक्शन होता ही ये है बेसिकली कि हमने आपने कंक्लूड करना है, उसको जस्टिफाई करना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मटेरियल मेथड ये सेम। सो दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture, and now you can ask question if you have any question.